Okay, so today we are going to do the um, last class. We started atomic structure, and we were doing the Bohr's orbit, dual nature, Heisenberg uncertainty principle. These topics. Today we are going to focus on the orbit, orbitals, and so on. ठीक है? तो basically थोड़ा सा आप लोग को आइडिया आइडिया दे देते हैं that regarding quantum numbers. So basically आज का टॉपिक हमारा quantum numbers होगा, and then orbitals, and then the electronic configuration of different atoms. So we have principal quantum number, that is n. It tells about the shell number, and the values which are possible for this is 1, 2, 3, and so on. Okay. Then we have the azimuthal quantum number. This is denoted by L. And azimuthal quantum number, it gives the idea about the subshell. Okay. So the values which are possible for azimuthal quantum number is 0 to n minus 1. And here, if you have the value 0, it corresponds to the S subshell. If it is 1, it corresponds to the P subshell. If it is 2, then it corresponds to the D subshell. And if it is 3, it corresponds to the F subshell. Okay. So 0 to S, 1P, 2D, 3F, and so on. ठीक है, अगर आपके पास 4 हुआ, that will be G subshell. So G subshell के लिए जो azimuthal quantum number होगा, that will be equal to 4. S, P, D, F हो गया. Then we have the magnetic quantum number, that is noted by M, and it tells you about the orbital. The possible values for this is minus L, 2 plus L. ठीक है, तो -1, -2 इस तरह से यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं. Then we have the spin quantum number. It tells you about the spin of electron. The possible values are plus half or it is minus half. ठीक है. After this, we are going to start the questions now. Shall you try this one? Try this, guys. I think this can be done. List the possible values of. If Khadija is not connected to the audio. बाबा मेरी आवाज जा ही नहीं रही होगी.
Sir, Yeah, tell me, Amna. I got the second one. I'm You not got getting the first one. possible values for or all the quantum numbers for the following. ना देखिए, तो first वाला ये हम explain कर देते हैं. 2p. So from here itself I can get the n, that is the principal quantum number, that is equal to 2. And from p I can get the l, that is equal to s के लिए 0, p के लिए 1, l is equal to 1. The possible values for m can be equal to what? Plus 1, or rather I should start with minus. Minus 1, 0, plus 1. All of these values for m are possible. For s we can have only two values, half or minus half. Does this make sense? Yes, sir. ठीक है. Similarly, जब हम लोग second 4f के लिए जाएंगे, so 4f, so n will be equal to 4, the l will be equal to how much? S0, pdf will be 3. So m will be equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. And for all of these different minus 3, minus 2, minus 1, the value of s will be either plus half or it will be minus half. Does this make sense? Yes, sir. Copy this down. Once you're done writing that, please write this question. अगला सवाल कर लीजिए. फर्स्ट वाला तो हो जाना चाहिए जल्दी. सेकेंड वन इज ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन राइट नाउ, एंड दिस इज अ बिट डिफरेंट, बट इसको भी आप लोग कर लेंगे. ठीक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फर्स्ट वन एंड देन सेंड द आंसर्स ऑन द WhatsApp. Once you're done, you'll send the answers on my WhatsApp.
Guys, one more minute and then I will solve the question. You will send me whatever you have done. Please send me whatever you have done, Amna and Khadija. Okay, Amna, I have received yours. Yeah. So when n is equal to 2, L can be equal to 1. And when L is equal to 1, M can be equal to -1, 0, and +1. When L is equal to, L will be, अच्छा, just give me a second. L को पहले हम यहाँ पास लिखते हैं 0 to n minus 1. So L will be equal to 0, n minus 1 will be what? 2 minus 1 will be 1, 0 and 1. So the possible values for L is what it is? 0 and 1 only, right? 0, 1, 2 नहीं होगा ना, 0 and 1 only. Right, Amna? Yes, sir. ठीक है, हम देखिए तो जब L की वैल्यू 0 है तब M की वैल्यू 0 होगी, और जब 1 है तो M की वैल्यू विल बी इक्वल टू -1, 0 एंड +1. ठीक है. चलिए, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वाला कीजिए. Guys, one more minute for the second one.
ओके, टाइम इज अप। आमना कैन यू प्लीज सेंड मी? खदीजा, व्हाट हैपेंड? आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा है। What happened? Deleted that photo? जी हाँ. So for the second question, we have 3D. This is n is equal to 3. L will be equal to S0 and PDF. अच्छा, ऊपर वाले सवाल में हमने एक मिस्टेक कर दिया था. इसमें तो एल एफ का -3 होता है ना. SPD F, हाँ ठीक. माय गॉड. सो डी जो यहाँ पे होगा, एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2. सो द वैल्यू ऑफ एम विल बी इक्वल टू -2, -1, 0, +1 एंड +2. ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एम. ये हो गया है ना. व्हाट अबाउट दिस वन? ये तुरंत आंसर कर दीजिए चैट में, ज्यादा टाइम नहीं. आई विल गिव यू गाइस 10 seconds फॉर दिस. Which of the following is not possible? In the Zoom chat, you can answer me. ओके, नो आंसर्स. देखिए, हाउ टू चेक दिस वन. इसमें आपको क्या चेक करना था? जैसे 2D है आपके पास, n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन l. इफ n इज नॉट ग्रेटर देन l, दैट मींस दैट सबशेल इज नॉट पॉसिबल. सो 2D की अगर हम बात करें, सो हियर n इज इक्वल टू 2 एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 2. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. उसके बाद 1s. 1s में क्या होगा? n इज इक्वल टू 1 एंड सॉरी, d का नहीं, मतलब l जो होगा, सॉरी माय बैड, है ना. L इज इक्वल टू 2, यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. सो दिस इज पॉसिबल. 2p की अगर बात करें हम, so n is equal to 2 and L is equal to 1, so this is also possible. N is greater than L. Then we have 3f. So in 3f, n is equal to 3 and L is equal to also 3. So this is not greater, it is equal. That is why this is not possible. So only the 1s and 2p are possible. Please write this down. Done, sir. जी जी, हम थोड़ा दूसरे सवाल देख रहे थे. Yes, try this one. Using the SPDF notation, describe the orbital with the following quantum numbers. एक हम आपके लिए कर देते हैं. देखिए, first one is n is equal to 3. So 3, L is equal to 0, that means S, PS. ऐसी B, C और D के लिए क्या होगा? Please write it down.
बाप रे, बहुत टाइम लग रहा है भाई। प्लीज सेंड दी आंसर्स, व्हाट हैपेंड? अच्छा, आपने इसमें भेजा है व्हाट्सएप। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर्स ऑन द जूम चैट इटसेल्फ बिकॉज़ दीस आर स्मॉल आंसर्स। सो बी के लिए हो जाएगा 4D, वेरी गुड। देन इट विल बी 5F एंड देन इट विल बी 1S। या वेरी नाइस। चलिए, नाउ वी कैन मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस जहां पे आपके पास क्या पूछे जाते हैं। एटॉमिक नंबर दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। तो पहले थोड़ा सा आसान से हम चाहते हैं शुरू करें, दैट इज नॉर्मल एटॉमिक नंबर्स रादर देन। चलिए, कुछ काम खुद ही दे देते हैं। यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट इज सोडियम 11, सेकेंड इज आप लिख लीजिए सल्फर 16, उसके बाद लिख लीजिए मैग्नीज 25, उसके बाद लिख लीजिए आप कोबाल्ट 27। इस ब्लॉक कर देते हैं। सल्फर हो गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 आई थिंक विल बी गुड। Guys, I will give 2 more minutes for these questions because these are very typical questions. इसमें कुछ भी ऊपर नीचे आप लोग को नहीं करना है।
Guys, time is almost up. Please send your answers. 1 minute, sir. One is left. Acha, one is left. Send me once you're done, guys. Amna, भेज दीजिएगा once you're done. Okay, sir. What happened, Amna? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? Done, sir. हाँ, तो भेजिएगा नहीं? You will send it to me, ना? Yes. चलिए, let us see. So, sodium element 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल में ही खत्म हो गया. सल्फर के लिए देखिए, स्कूल स्कूल Sir, पब्लिक I have स्कूल. sent you. You have sent me? ठीक. हाँ, ठीक. तो अब इसी में आप फर्क लेकर देख लीजिए, होपफुली यहाँ तक हो जाएगा. स्कूल 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया हमारे पास? 10. Then 3s2, still we are remaining with few. So school school public school, फिर से public school आता तो public. This will be 2p, तो 3s 3p. 3p how much? 4 is remaining ना, 4 हो जाएगा. 6 4 10 16, ठीक है. Here we will have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. ठीक है. This is 10, this is 10, and this is 5, 25. Cobalt 27 will be similar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d7. Aluminium will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 6 plus 4, 10, and then 3, 13. आपने कोई एक नहीं किया है, सोडियम किया, सल्फर किया, एल्यूमिनियम किया, कोबाल्ट किया, मैग्नीज नहीं किया आपने। आमना, Mn 25। Yes, sir. इसके बाद देख लीजिए जरा, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम इज 24, कॉपर इज 29। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और हम बता देते हैं, देयर इज वन मोर वे इन विच वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूजिंग द नियरेस्ट नोबल गैस। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट इज 10 and 8, 18. So this corresponds to argon. So this can also be written as argon, then 4s2, 3d5. Argon में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 is involved, is inside argon itself, है ना? तो क्रोमियम के लिए भी 18 इलेक्ट्रॉन तक हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन विल राइट 4s2 एंड 3d4। दिस इज द एक्सपेक्टेड विच इज रॉन्ग। एक्चुअल में क्या है इसका, आर्गन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन। सॉरी माय बैड, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर टू द 3d बिकॉज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। एंड कॉपर में आर्गन, it seems like 4s2 and 3d9 should be correct, but this is wrong. And argon 4s1, 3d10 is correct. This is half filled and this is fully filled. ये तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की बात हो गई। नाउ इफ देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इन cation electron is removed from the outermost shell। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए आ गया Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो Mn का हम लोगों को पता है दैट इट इज आर्गन 4s2 एंड 3d5। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बिकॉज इट इज लीडर ऑन, बट दैट्स नॉट ट्रू। रादर इट विल बी 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द 4s सबशेल बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट। और आपके पास जो आ जाएगा दैट विल बी आर्गन 4s0 एंड 3d5 विल बी एज दिस। ठीक है, चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन। Let me know once you're done writing.